middle of the track, drive in the safety car. M5 competition. You can see right in the middle. Yeah. M5 CS. भाई मेरे को चक्कर आ रही है। अरे मेरा फोन। जिंदा हो अभी? Next level, crazy fun. Okay, bhai log, can you hear it? The sound of speed racing past the track. We are right underneath the tunnel with the track right over our head and headed to the VIP lounge of Michelin, where a lot of action is happening, and then we're going to feature the entire MotoGP event for you. Let's not waste any more time. Let's get going. So भाई लोग आ गए हैं। ओ भाई, यहाँ पे एक सरप्राइज गेस्ट है हमारे, सबसे मशहूर, सबसे जानदार और सबसे ईमानदार। ये सही था भाई। और ये है MS के, इसको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। है भाई, मोहम्मद सलीम खान, मुंबई से हूँ। यूट्यूब चैनल है हमारा, मतलब भाई जैसे ही हमारा जॉनरा है। कितने 2 3 4 कितने मिलियन हो गए अभी? नहीं, मतलब अराउंड 1.7 मिलियन ही है। हाँ, लेकिन मैं इनको बहुत दिन से जानता हूँ। लाइक ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट गाइज हु स्टार्टेड, वी ऑल स्टार्टेड टुगेदर, एंड द काइंड ऑफ एडिटिंग दिस गाइज डज ना, अलग ही लेवल पे है। तो सब लोग इसके एडिटिंग के फैन है। भाई इसका राज क्या है बता देना। सिर्फ पेशेंस। मेरे लिए ऐसा है ना कि जब कोई स्टोरी को मैं पोर्ट्रे करता हूँ ना, सो आई ट्राई कि उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करूँ। एंड आई फाउंड कि एडिटिंग एक ऐसा तरीका है जिसको मैं अपने स्टोरी को घुमा के या कैसे भी बता सकता हूँ इंटरेस्टिंग वे में। सो दैट्स व्हाई आई चूज कि एडिटिंग थोड़ी अच्छी होगी तो व्लॉग अच्छे बनेंगे। बिल्कुल। बट आजकल लोगों को एडिटिंग नहीं देखना, आजकल लोगों को कंसिस्टेंसी चाहिए, हर दिन डेली व्लॉग चाहिए, जो कि हमारे बस की बात नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ। जो भी है, पहली बार MotoGP इंडिया में आ चुका है। प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कैसे लग रहा है? अरे बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट। मतलब कि अभी इंडिया, मतलब जैसे हम कहते हैं कि नया भारत है। हाँ। तो नया भारत में ये सब चीज़ें होना कंपलसरी थी और वो हो भी रहा है। तो बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है कि भाई इंडिया अभी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऐसा उठ के आ रहा है बाहर। सही। अभी MotoGP सिर्फ इंडिया में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ MotoGP इंडिया में लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हाँ। MotoGP मतलब वर्ल्ड वाइड इंडिया प्रमोट हो रहा है कि भाई इस बार का MotoGP इंडिया में हो रहा है। सो इंडिया का नाम हो रहा है MotoGP यहाँ होस्ट करने से पूरे। और अपना इंडियन राइडर भी पार्टिसिपेट कर रहा है। लेट्स होप ही मेक्स इट बिग, एंड जल्द ही ट्राई कलर विल फाइंड इट्स प्लेस ऑन द MotoGP दिस थिंग। हिंदुस्तानी चांद पे जा सकते तो हर कहीं। Anyway, और मिचलिन की तरफ से हम लोग आए हैं, सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू मिचलिन, एंड आई हैव यूज्ड मिचलिन रोड 5s एंड आई एम सीरियसली इम्प्रेस्ड। आपका क्या रहा है? व्हाट मेक्स मिचलिन स्टैंड आउट? मिशेलिन अभी MotoGP का मेरे ख्याल से ऑफिशियल टायर स्पॉन्सर है। हाँ। टायर पार्टनर, टायर स्पॉन्सर कह सकता है। सो मिशेलिन मतलब वन ऑफ द बेस्ट टायर्स तो बनाता है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस भी है। बट मिशेलिन के टायर को अगर हम अपने बाइक पे लगाते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस ट्रस्ट यू कैन लाइक आप कर सकते हैं। He does a lot of long distance touring, and the words coming from his mouth actually means a lot, that he trusts Michelin as a brand which is never going to let him down. Okay guys, before we take a look at Michelin's association with MotoGP or the legacy between both of them, I'll talk about my experience having used Michelin Road 5s in my Ladakh rides, and boy, the kind of trust, the confidence the tire gives you is epic. You can still watch my vlogs, and you can see the kind of road grip, the kind of confidence it offers in the most trying and the most treacherous terrains that you can find out there. Michelin has already won 480 races and 33 world titles, and that talks about its obsession with perfection and pure racing pedigree that defines the kind of quality they dish out with their tire technology, and
that's the reason why MotoGP has extended the contract till 2026. That's the news, recent news that has been confirmed. They started supplying the tire in the premier class since 2016. Now the contract has been extended up to 2026. That's the kind of trust that they have built with their top class MotoGP class tires. So 50 years of innovation in MotoGP, and you can see it all started back in 1973 all the way up to 2023. And here you have the facts about the tires that these mean machines run on. 15,000 is the number of kilometers covered by a rider during a season. 22 slick tires are used during a Grand Prix weekend, including free practice, qualifying, warm-up and the race. The minimum tire pressure for a tire used in the race 1.88 bar, and the rear slick is 1.68 bar. In the rain it is 2 and 1.7, and the operating temperature 100 degrees front and 120 at the back. And this is about the motorcycle itself. 240 horsepower, 4-stroke, 1000cc, 22-liter tank capacity, and weighs just 157 kilos. Can you believe it? Imagine the power to weight ratio. And these are two tires supplied by Michelin in the MotoGP. You have the power slick and the power rain, depending on dry or wet surfaces. And the tire sizes are as below. And the rim size is 17 inches. So Milo, we are at the Michelin workshop. This is hot, hard is for the tire. Yes. Because more the temperature is higher, less grip you have in the track. So it's more difficult to. Oh, so you said the more it is hot, the less grip you have. Yes. Yeah. More temperature in the track, less grip. So because the tire Expanding. the tendency is contact patches. overheat. Yeah. You go over the the working, and then it started to spin. Okay. And then I can show you here is the tire we move. You see, we have 5 containers. In the containers we have 1,200 tires. So we have some slick tire. This is for dry condition, and some for wet. Is the one with the tread design. So sir, you said for every track you have a specific tire. Yes. So this is the first time MotoGP is coming to BIC. So did you develop a whole new tire for the track? Yes, for this track, yes, we developed a new tire because the track layout is different. It's similar to Thailand, similar to Austria, but it's more demanding. More straights are there, long straights are there. Yeah, we have long straight, also hard braking. So the front tire is the hardest compound we have in the range. Is the standard one. For the rear, we use the casing from Austria and Thailand, and we put harder compound. And the temperatures here are quite high. So Yeah, temperature is high, but this was not a problem. We test a lot. We did a lot of tests. Friday we had 2 sessions of 70 minutes. And temperature was not a problem. Here the problem is consumption on the rear. So tire consumption, the wear is the key. Yeah, is higher compared to the other track. The temperature, it's all the track surface. And Yes. how much the track surface also takes away from The track surface it contribute because, like I said before, is higher, so you have a lot of spin. And when you do spin, you warm the tire more. So you have to control with the gas or with the electronics. How many tires do you supply to each team? how many tires are going for each rider, allocated per rider? Yes, for each riders, every weekend they have 15 front and 12 rears. And then they choose the one they prefer, they manage the quantity at the Okay, allocation. and the actual allocation is done by lottery method. That's what you just said. Yes, and the So it's- allocation is chosen by lottery. So is the technical director from IRTA. He make the lottery. He decide which one go to which riders. So you guys saw that the tire allocation is done by lottery to make sure there is no partiality shown that Michelin is making special tires for Bagnaia or special tires for Fabio. So it is completely neutral, such that there's no advantage enjoyed by any rider. And man, this facility is so damn good, gives you a lot of satisfaction. And these rims here are, the lightest I've seen. Magnesium rims. Huh? You can lift it with one finger. So all set for the VR46 tour. Their racing academy, their racing team, and we have ma'am who's going to walk us through, and we have the dealers from distributors from Michelin. Yeah, loud and clear. Okay. Here's the gentleman. Go inside. I will ask you, please don't take any
देखो देखो कौन मिल गया है मेरे भाई लोग यहाँ से, आइडियल राइडर रॉकिंग एज ऑलवेज, पुलक भाई राइडिंग एज ऑलवेज। ठीक है, ये लोग, इसका राइडिंग रुकता ही नहीं, इसका ये तो रॉक स्टार है भाई, मुझे हो तो अपने भाई जैसे, वो पता नहीं कैसे वो डिज़ाइन आता है, वो डिजाइन बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। अच्छा सुनो, अभी MotoGP तो देख लिया, Yes, exactly. मज़ा तो आ गया, बहुत मज़ा आया। तो आपको पता है उसमें हर टायर जो यूज़ किया जाता है वो मिचलिन का है। एंड थोड़ा फैक्ट्स मैं बताता हूँ आपको। Exactly. जैसे उसका जो टॉप स्पीड अचीव हुआ है मिचलिन टायर पे 363 किलोमीटर पर आवर। भाई साहब मैं एग्जैक्टली ये फिगर नहीं जानता। ये फिगर, और एक सेकंड थोड़ा शॉकिंग वाला फिगर, जो 340 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर ब्रेकिंग 6 सेकंड में, 6 सेकंड में कुछ ज्यादा ही। तो इमेजिन द जी फोर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद लीन एंगल अपन 45 डिग्रीज का सुनेंगे, यहाँ पे 65 डिग्रीज का मैंने 63 तक देखा था, देखा था, 65 हुआ है। 65 हुआ है। ज़्यादा ही हो गया। एंड ये वाला, ये लेवल पे टायर्स बनाने वाले सिर्फ मिचलिन, एंड दे हैव बीन डूइंग इट फॉर since 2016 कमाल ही for हो the गया। premier class. Yes. So guys, the action continues and I'm here at the Michelin fan zone, the stall set up here at MotoGP Bharat. Boy, what a day and what an experience. I mean, goosebumps all over, and the race was equally, challenging and competing at the best of the best, battled for the top spot, and supporting them all is Michelin, because they are up for it no matter how fast you push the vehicle, how far you lean the vehicle. The Michelin tires never give up on you, never let you down. That's the kind of confidence that I have experienced when I have done long distance touring on the Michelin Road 5s. Can't wait for the Road 6. Okay, all set for the simulation experience. This is at the Michelin fan zone, by the way. That's what it's all about. It's about all the racing action that is here today with